Good evening, everyone. Good evening, good evening. Good evening, Nilesh. Good evening, Ranjit. Good evening, Jasim. Good evening, Sudhir. That's great to hear, Sudhir. Welcome back. Good evening, Imran. Keep the charts clean, guys. Good evening, Tosif. We'll start in 2 minutes. Good evening, Varun. Good evening, Sridevi. Okay, let's start with the gold. किसी को भी कोई डाउट है पहले पूछ दो. So I will add in the screening itself. So it will be easier for you guys. किस किस का क्या क्या डाउट है प्लीज ऐड कर दो स्क्रीनिंग में. वी विल ऐड ऑन विद दैट. Wick calibration will be taken under the controls of a different angle perspectives, not in the streaming version. Okay. Good evening, Ans. G. So starting with daily time frame. So swing selection only main out. Okay, Jasim. Good evening, Smita. That I will add it in today's session. Okay, Jimmy. We are waiting for one more. वो आते ही शुरू कर लेंगे. आज का जो भी ट्रेड हम अलोकेट करेंगे, इमरान, मेजरली यू, because you are the one person who are working on swing as of now. So जो भी लॉन्ग का अलोकेशन होगा गोल्ड में कैरी फॉरवर्ड होगा. ओके. पोस्ट 745 का अलोकेशंस की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं. गुड इवनिंग अरुंधति मैम. मैम यू आर लेट टुडे. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस रेंज ऑफ डिमांड जोन, ये हमारा डिमांड था, उसके साथ ये हमारा इंड्यूसमेंट. मूवमेंट ऑफ एक्शन कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, जो हमारा प्रीवियस एक्शन पॉइंट रहता है इंड्यूसमेंट का, उतना ही रिजेक्शन के साथ कंटिन्यू होगी विद द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द डिमांड अलोकेशन. डिमांड जैसे अलोकेट होता है
continuity है with the breakthrough. With the breakthrough, we will look for 150% rejection. With the 150% rejection, market ने क्या किया? Market ने buying pressure allocate की. With the buying pressure allocation, हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिली? First zone of action plan. With the first zone of action plan, यहाँ पे what are the two major things that you have to keep in the mind? You have to take the consideration of previous supply. जो कि हमारा सप्लाई यहाँ पे जनरेट होता है, that will only act as the current demand. With the current demand plan of action, what do? You allocate the perspective of to the next. When you allocate the perspective to the next, what are the major circumstances that you will be following? You will be following the back action of the supply, जो कि हमारा retracement होने के बाद का first point of interest होगा. With that first point of interest, market ने break करके continuity में गई है, so we will double the action plan. With doubling the action plan, what is the circumstances that we'll be looking over here? 150% and 200% rejection. With that allocation, what are the next major circumstances that will be taken under the consideration? The entire movement from the retracement point of action will be calibrated to the next. Right? With this plan of action, we have a rejection with the rejection continuity. Right? वहां से मार्केट ने यहाँ पे S1 B1 सेटअप के साथ ब्रेक थ्रू दिया. अभी what are the major circumstances हमें फॉलो करना है? किस चीज के ऊपर मेजरली बने रहना है? That is 4 hours mathematical calculations. So at this state of actions, ये हमारा swing eye होगा. This will act as my retracement point. So at this point of action, this will be my retracement zone, right? Swing low मिल गया है, swing high मिल गया है. उसके साथ we do have a plan of action of retracement. So what are the next things that we are doing? We will calculate the numbers. So in this scenario, my swing high is 3167.040 minus the swing low will act as 3063.450. What is the formulative number? Formulative number is 103.59. With that, what is the retracement point we are having? The retracement point is 3136.434. In this scenario, what is the direction? Bearish. So we will subtract the formulative number. So with the retracement point 3136.434 minus 103.59 into the golden ratio at the first stage. The golden ratio is 1.618. What is the first targets that we are having? The first target we are having is 30, sorry, 33. सॉरी द फर्स्ट टारगेट हमारे पास आके जो है वो है 2968.825. Right, this will be my major action plan which will be taken under the consideration. With this plan of actions, what are the major next allocations that we'll be looking at? The next major allocations will be taken under the perspective of the 1 hour. So अभी के लिए we will allocate the mathematical numbers हो चुका है, उसके साथ supply and demand allocate करके चलेंगे. With that plan of action, what do we notice? We notice a rejection and a continuity. With the rejection and continuity, this is my previous demand. Previous demand जितना point of action का allocation होता है, उतना ही retracement allocation होती है. Retracement कहाँ का होगा? जो previous allocation होगी bullish moment का, that retracement will act as my current. In this scenario, this is the point of interest. With this 150% rejection, 150% rejection के साथ continuity. In the continuity, what do we see? We see a break and continue. When we see a break and continue, 150% will be the target point. With 150% target point, market ने यहाँ पे क्या किया है? Market ने यहाँ पे slow and steadily develop किया है movement long के तरफ. उसके साथ do we have a current selling or buying pressure in the market of 4 hours? No, we don't have 4 hours buying or selling pressure. So at this point of action, what we do? We wait. जो सुबह से वेट करके बैठे हैं, so same चीज will continue till the time the market won't give you a price action.
With the price actional point, what are the next step will come down to 1 hour. In the 1 hour circumstances, what do we notice? We notice that market is in the POI range. When there is a POI range, you guys will not execute the trade because your capitals are too low, and no blowing the accounts in this scenario. Is point of actions में what are the second major circumstances that will be working? The second major circumstances will be working on to the previous 4 hours का golden ratio mark हो चुका है, उसके बाद break नहीं है, तो we will not mark हमारा intermediate ratio mark नहीं करेंगे, new allocation point भी हम नहीं देखेंगे. In this scenario, what are the major things we'll be looking? The supply allocation. The supply allocation we will look into this circumstances? No, because the allocation point over here is acting as the minimality. जब minimality में काम करता है, what are the major swing selections that we'll be doing? We will be taking the entire liquidity allocation of the previous supply. When you take that allocation into the current point of action, what do we notice? We see a 150% break. When there is a 150% break, what are the next step of allocations that will be followed at the current stage? At the current stage of action, we look for the allocation. मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो डिमांड एक्ट करेगा दैट विल बी दिस सप्लाई, बिकॉज फ्रॉम द बेरिश एंगल एक रिट्रेसमेंट जनरेट हुआ है, उसके साथ मूवमेंट कंटिन्यूटी में हुई है. व्हेन द मार्केट टेक्स अ रिवर्सल, which will be the acting point for you guys, राइट? यहाँ पे अगर डिमांड जनरेट होता है तो आपका वो सप्लाई होना चाहिए, ये वाला सप्लाई जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, that will act as your current demand. So in this scenario, this supply will act as my current demand zone over here. With this zone of action, what do we notice? We have a breakthrough and continuity. Yes, we have a breakthrough and continuity. When we have a breakthrough and continuity, what are the major action plans? 150% will be the zone of action. With the zone of action, what is the continuity action plan that we'll be allocating now? The continuity action plan is sitting calmly till the market gives an indication. Okay, no hurry worry. So this is our 1 hour. We are not allocating any mathematical numbers at the stage of actions because market is in the zone of POI. Once a zone is break, then the action plan will be created. With the action plan, the next circumstantial breakthrough will be generated. With that breakthrough only, we will look for the next. In this zone of conduct, in 15 minutes, what is the indications that market is giving? The indications of the market is given through the selling pressure. In this zone of conduct, what are the major things that I'll be following at the state? The major thing I'll be following at the state of action will be through the previous. For an example, at the state, we have a movement generation. So with this movement generation plan, what do we see? We see a S2B2 setup. With the S2B2 setup, market had created a small inducement with the small inducement continuity. In this plan of actions, I'll be allocating the two major circumstantial evidential move that will be one with the previous action plan, and the inducement range of allocations will be taken through the inducement zone. With the inducement zone, prematured movement action which will be taken under the consideration of 150%. जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 150% एक्शन प्लान जनरेट होते हुए दिखी है, what are the next major steps that I'll be taking and following at the current point of movement? We have a breakthrough. With the breakthrough, we have a continuity that will be taken under the consideration of previous POI. In this zone of action, this is my previous, so this will act as my current. What do we see? We have a breakthrough and continuity. In a breakthrough and continuity, 150% zone of action. With this zone of action, what are the next major calibrations that will be taken under the consideration? We need a break. With the break of continuity, this will act as my demand. Retrace कितना हुआ है? जो मेरा previous demand allocation है circulating supply में, that will be the point of interest. With that point of interest, that will act as my current supply. With the current supply, my previous demand allocation will be my current. So in this scenario, we have a target of 3011 at the point of zone. With this point of zone, what are the next plan of indications that needs to be taken under the consideration? S1 या S2 setup create होने दो, उस setup के साथ movement, with that movement closure. Any doubts in gold, guys?
right? Post completion of this, what will the market tend to do? Market will create a 150% breakthrough. With the 150% breakthrough, a small rejection to hunt down the retailers. Hunt down of the retailers कहाँ पे होगा? जहाँ पे ए ब्रेकआउट होगी, सबको शॉर्ट की तरफ बिठाएगा, एक प्लान ऑफ एक्शन, उसके बाद कंटिन्यूटी, and this will be taken under the consideration post 7:30 7:45. Then yes, definitely I am very much interested in that trade of allocation, not prior to that. Okay. Premature movement action, definitely I will explain it to you in a different video, right? What is premature movement? Premature movement, sweet and short mein samjhata hu. It's a movement action plan which is considered in the previous allocation. मतलब एक movement allocate हुआ है at the point of interest, and you have got a nice movement above 100 pips. Anything above 100 pips or 150 pips, उसके बाद जोन ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ है. जोन ऑफ एक्शन क्रिएट होने के बाद एक पीओए रेंज में जाता है, राइट? सो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल मार्केट टेंड टू डू? जैसे ही पीओए रेंज क्रिएट करता है, it will make each and every retailer sit into the action plan. When there is an action plan built, what will market tend to do? Market will create a structural liquidity for both the buyers and sellers. So पहला buyers को hunt करेगा, उसके बाद sellers को hunt करेगा. जैसे ही sellers को hunt करता है, यहाँ पे premature liquidity generate होता है. Premature liquidity मतलब जो भी liquidity allocation में in the point of range, matlab just for an example, if a buyer is looking at a discounted price of 100 rupees from a 150 zone, and a seller is looking for a discounted price at 150 and execution of 100, so that will be called as premature zone. दोनों को equally allocate करता है. So in this scenario अगर notice करते हो, we had a movement more than 150 pips. With the 150 pips movement, what did market tend to do? Market created a structure. उसके बाद market यहाँ पे POI zone create किया, right? POI zone create करने के बाद what did market tend to do? Market first gave a opportunity for the buyers. With the buyers opportunity, now it will hunt down the sellers, right? With that plan of action, market ऊपर जाके continuity में breakthrough देगी. So that is premature action plan of a movement. Okay. Actually, I shouldn't conduct the class and come on live. Anyways, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत knowledge sharing is really good. गोल्ड में कोई और डाउट है किसी को भी? इमरान, जसम, अंस, सुधीर, रंजित, तोसिफ, anyone has doubts? Shri Devi. If no doubts, I'll be moving to BTC. यहाँ पे एक सेटअप प्लान ऑफ एक्शन दिखने को मिलेगा, इसके साथ एक बड़ा सा लिक्विडिटी हंट होने वाला है यहाँ पे. ओके, बी रेडी फॉर इट. कैन यू एक्सप्लेन द गोल्ड ट्रैप सिनेरियो ऑफ करंट सिनेरियो? करंट सिनेरियो में गोल्ड ट्रैप नहीं किया है, वहाँ पे कुछ और ही क्रिएट हुआ है. इफ यू आर सेइंग दिस इज अ गोल्ड ट्रैप, हो गया. नोटिस करो,
from morning 9 o'clock till now 16:15, the market has just grabbed the liquidity. Just expect one more 450 plus points today. Okay. Setup videos are there. I started from first video, currently at the sixth video. Not aware of the setup. ये सब videos में नहीं है सुदर्शन. Okay, let's start with BTC. With the BTC allocations, आप लोगों का major doubt and allocation से गलत होता है. So I will allocate and showcase you how does the market tends to look for. Right? फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो जो मैं अलोकेट करते चल रहा हूँ वो लोग आप लोग भी अलोकेट करके चलना मेरे साथ. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होगा ये वाला. मार्क आउट द एंटायर पीओआई रेंज. With the entire POI range, what is the next movement that you will be multiplying and you will be looking for a structure post the inducement. Post inducement range of action, market ने क्या किया है यहाँ पे exact rejection develop किया है. With the exact rejection development, what is the next steps that will be taken under the consideration? The next considerable movement action plan is internal liquidity point. So this is my current internal liquidity. So we will mark that. So post marking internal liquidity zone, what are the next indications of the markets that will be following through? Will be following through a action plan of to the previous. So this will be my entire demand zone marking. Why we will be taking the entire demand zone marking? Because we have a break of structure generated. So the wick will be taken under the calibration. With this, S1 B1 setup के साथ S2 B1 के साथ setup execution. With the setup execution, what do we notice? We have a body closure. Once we have a body closure, what are the next movement allocations that will be taken under the consideration? There was a rejection perspective. We'll mark the rejection perspective. उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ है वो रिट्रेसमेंट कहाँ से अलोकेट करोगे? जो प्रीवियस हमारा सप्लाई जोन ऑफ एक्शन है उसी का मूवमेंट को मल्टीप्लाइड वर्जन में जब अलोकेट करेंगे दैट विल एक्ट एज अ डिमांड. विद द डिमांड एक्शन प्लान जो मेरा प्रीवियस सप्लाई अलोकेशन है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिट्रेसमेंट के साथ अलोकेट करूंगा. With the allocation, what do I see? We see a completion movement of golden ratio of 4 hours point. Right? With this point of interest, what did market tend to do? Market tend to start taking the rejection. So rejection perspectives यहाँ पे देखने के लिए what are the first major indications that will be taken under the considerations? We will look for the previous. In this zone of action, this is my previous demand which will act as the current. With the current demand act, what do we notice over here? We notice a breakthrough. So with the breakthrough, first action plan is 150% जो कि हमें यहाँ पे मिली है. With that continuity में market redevelop हुआ था. When the redevelopment happened, what is the first plan of action that will be taken under the consideration? The previous supply. जो previous supply daily का motion point of action में है उसे allocate करेंगे यहाँ पे. With that we had a wick generation. Wick is not a problem for us. उसके बाद क्या करने वाले हैं? जो हमारा first demand action plan है that will be taken under the consideration and reallocated post the movement. Right? Post the movement can be looked in two circumstances. One allocation with the point of interest of the wick as a scenario one. And what do we notice? We have a exact breakthrough of 200%. Second scenario of looking into the circumstances is whatever the movement is generated at the current state of action that will be taken with the retracement point. With the retracement point of action, what do we notice? We have a break and continue. When we have a break and continue, scenario 2 comes into the play, 150% zone of action. So with both the scenarios, market यहाँ पे क्या किया है? Rejection लिया है. Right? With that, let's come down to 4 hours. With the 4 hours action plan, what are the major setups that we'll be following at the current stage? First one is the swing low at this point. This will act as my swing low. This will act as my swing high. This will act as my retracement. Let's do the math. Once we do the math, we'll understand market kahan pe hai at the current state of actions.
For the bullish movement, the swing high is 8225.48 minus swing low is 7664.02. What is the formulative number that I'm having at the current state? The formulative number that I'm having is 5561.46. With that, the next plan of indications will be taken under the consideration of the previous, जो कि retracement point of action क्या है हमारा 79,121.41. With that, direction is bullish. So 79,121.41 plus 5561.46 into 1.618, जो कि हमारा golden ratio का number है, that is 88,119.85, जो कि exact rejection from the golden ratio है, right? Post that rejection point, the market has tend to come down in an exaggerated way, so we will not look for the next. We will just allocate the intermediate ratio and keep it for the further times. क्योंकि very soon the market has already in the Black Friday crash, मतलब blackout zone से निकलने वाला है बाहर. So जैसे ही 68,000 का zone of action break होता है, you won't be able to see the movement or enter into the movement. उतना fast buying आने वाली है, right? So the execution point of allocations will be of 90,244. So that will be my next point of interest of long side. Right, with the long side of plan, what are the next steps which will be taken under the consideration? The considerational movements which will be taken into the point of interest will be with the swing high of the 4 hours point of interest will be 1, right? With this interest point, the 2, with that, the last interest point will be taken under the consideration of this. So let's do the math and check where exactly the movements are and from where the plan of action is looked at. The swing high at the current stage is 88,562.96. Your swing low at the current state is of 81,233.90. What is the formulative number? The formulative number is 7329.60. Right? What is the retracement point? 84,725.98. What is the direction? Bearish. So 84,725.98 minus 7329.06 into 1.618. What is the first target that I'm having at the ratio? The first target that I'm having is 72,867.56. Right? With this, what will be the next step of allocations that I'll be looking? The next step of allocations will be taken under the consideration of intermediate ratio, which will act as 90,067.86. What do we notice? We have a closure of 200%. With the 200% closure, what are the next steps that will be taken under the considerations? We will come down to 1 hour, right? Definitely, before coming down to 1 hour, we have to mark the allocation perspectives. Do we have a break of structure? Yes, we have a break of structure. So allocation from the previous point to the current, which will act as my minimality zone of actions at the current point. Right, with this action plan, which will be taken under the consideration of the previous, with the previous zone 150%, which will be our zone of action of completion. Right, with this completion, let's come down to 1 hour. With completion of 1 hour perspectives, what are the next things the market has tend? Sorry guys, एक second रुको. Yes. So with this plan of actions, what are the next steps that will be taken under the consideration of the current point of 1 hour? We have a POI range because Saturday, Sunday थी बीच में. Yes, Saturday
को मूवमेंट नहीं आता है, संडे न्यूयॉर्क सेशन में मूवमेंट आता है, डेफिनेटली कल के दिन में भी मूवमेंट आया था। उसके साथ फॉलो थ्रू में विद द इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन, दिस विल एक्ट एज माय करंट डिमांड विद द करंट डिमांड रिजेक्शन and continuity. With the rejection and continuity, what do we notice? We notice a break of action, the break of action which was taken from the previous point. So in this scenario, this was my previous, which will act as my current. So with the current act of point, what do we notice? We have a continuity of the mixture. When there is a continuity of the mixture, there is a break and continue. If you see over here, with this, we have a minimality zone created. With the minimality zone, what will market tend to do? Market will complete 150%. In this zone of action, we have completed the 150% action plan. उसके वजह से ही टेलीग्राम पे 60% exit करने बोला था. Correct? So with that plan of actions, what are the next steps which will be taken under the consideration? The previous supply will allocated as the current. With the current allocation plan, what is the next step which will be taken under the consideration? Again, 150 to 200. So post allocation of this, what are the major steps which will be taken under the consideration? Do we do the mathematical calculations? No, we will not do the mathematical calculations. We'll come down to 15 minutes. In 15 minutes, what do we notice? We have a dropout. When we dropout को हटाओ दिमाग से, okay? So we have a plan of action. With the plan of action, the movement of demand got in created after the previous. With the previous, we have a retracement. With the retracement, reallocation. With the reallocation, the movement has completed. With the recompleted movement, we have a structural break. Post structural break, reallocation with S2B1 setup, break and continue. With the break and continue, what did the market tend to do? Market tend to cover up the 200%. With 200% coverage, what are the plan of actions that market has currently generated? The market has generated a surplus inducement. With the surplus inducement, there was a continuity in the blow. With the continuity, what did market tend to do? Market tend to take a rejection and reproduce the supply movement. When there was a reproduction of the supply movement, 200% closure. With the 200% closure, what will be the retracement? The inducement zone of candles will act as my current retracement point in this scenario. This will be my zone of action with the zone of action continuity. Continuity में movement कितना दिखने को मिलेगा? जो inducement range से 3 candle allocations है, that will act as my current point of interest. With the current point of interest, 100% rejection and market is trying to break. If the market breaks, then we'll look for the next spectrum of the previous. Example point, ये मेरा previous demand allocation है. अगर ये previous demand allocation के zone में है, then what is the next step that will be taken under the consideration? This will act as my next point. Okay, with this point of interest, what are the next steps that will be taken under the consideration? Wait patiently for the executions. Okay, any doubts, guys? Beautiful. Nilesh, no. Just for an example, if I look into the perspective of the previous allocation point of 4 hours, what is my previous zone of action, right? The previous zone of action, do we have an allocation point over here? No. Till the time we don't see allocation point, the previous will only act as my current. जैसे ही वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे बिल्ड आउट होते हुए दिखेगी with the proper supply allocations, then I will look for mathematical calculations from this point, not prior to that. Okay.
वेंकट, मैं टारगेट्स भी नहीं देने वाला हूँ ना डायरेक्शन देने वाला हूँ। मार्किंग हो चुकी है, मार्किंग के हिसाब से फॉलो करो। ठीक है। व्हाट द पॉइंट नीलेश? Only because the swing high low formations are not there, that's why we are not currently considering the current low. Right? Got it. No, 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 not like that. Just for an example, think there is a movement action. Okay. With the movement action, you have a price action, correct? With the price action, there is a continuity. When there is a continuity, so at the current state of action, you have a movement which liquidity is not yet grabbed fully. When the liquidity is not grabbed fully of this point, so always that point of action will be in the consideration. Because if the market comes down as well, what do you notice? You notice a grab through. When there is a grab through built, it doesn't mean that the liquidity is completed. The liquidity is still pending of the longer position of bullish run. When will that be completed? Once the market created a surplus liquidity point. With the surplus liquidity point, market will complete the first allocation point of the previous. Okay, so that is the point of interest that you have to be working on always. The surplus action plan will be in the current zone of index with the current zone of index movement allocation. Good evening, Santosh. When we use square root calculation and swing high, swing low calculations, and why? Comprehensive movement बोलते हैं उसे. Comprehensive movement is taken under the consideration to identify the targets. How do you identify the targets? Whenever there is a breakthrough of reallocation perspective.
Just for an example, you have an inducement at the point, right? With the inducement, there is a spectrum. जब इंड्यूसमेंट जनरेट होता है उस पॉइंट ऑफ एक्शन से कहाँ तक टारगेट आता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट फॉर्मूला यूज करते हैं. And mathematical conditions 2.0 is taken under the consideration in the privileges to the previous because of कंसिडरेटिव मूवमेंट अलोकेशन. मतलब उसी डायरेक्शन प्लान में जब भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होते हुए दिखती है उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्रीवियस अलोकेशन के हिसाब से किधर कैसे बैठना है विद द सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट करने के लिए वी यूज दैट सेटअप ऑफ एमसी 2.0. ओके. वेट अंबिका, व्हाई आर यू हरिंग? वेट. शांति शांति. So that means it's going for breaker block formation at the previous low, right? कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है ब्रेकर ब्लॉक बनने के लिए? नीलेश, where is the breaker order block to get conversion of a breaker block? ब्रेकर ब्लॉक कब होता है? जब जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुई है, राइट? इस ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट टेंड टू कम डाउन, राइट, and tap it with the tap and the confirmation movement gets occurred, right? This is an order block. And when there's the breaker block form, when the market tend to break the order block and take the rejection from the order block is called as breaker block. At this point of action, where do we have at the current scenario? Do we have it? Do we have a breaker block over here? No, right? Sir, one general query, if we should sell the gold now for high price and purchase if the gold reaches low, do you have the guarantee the market will crash? The market is not in even the breakthrough of 5%. It's in just the breakthrough of 3%. When there is a breakthrough of just 3%, you don't look for the next.
ओके, wing setup formation in gold, is that correct? How to develop the mindset of a lion? अंजलि, सच में सबसे बकवास क्वेश्चन है। हंस जी, 15 मिनट्स पीओआई रेंज भूल जाओ। राइट, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी हंट हो रही है। इस लिक्विडिटी हंट में हाथ डालने जाओगे तो अकाउंट उड़ेगा, अकाउंट बढ़ेगा नहीं। सो वेट, सुबह से हम वेट कर रहे हैं। राइट, एक ही एग्जीक्यूशन मिला है, वो भी यहाँ पे ठीक से ढंग का। एंड दैट टू, इट्स ओनली ऑफ 200 पिप्स टिल नाउ। अगर इस मैदान में हाथ डालोगे अभी, उड़ा देगा अकाउंट। सो वेट पेशेंसफुली। बुरा मत मानना जो भी बोल रहा हूँ, बट दैट्स द रियलिटी एट द करंट स्टेट। यू फोकस ऑन लर्निंग, वेंकट। जिनको भी ट्रेड करना है बीटीसी में करो, गोल्ड में हाथ मत डालो आज, जब तक ये जोन ऑफ एक्शन में है। जब तक ये बॉक्स में है हाथ मत डालो। ये बॉक्स का रेंज आके 300 पिप्स की है। हाई कैपिटल कैन यस, लो कैपिटल नो। गुड इवनिंग पटेल। मैं एक ही इंतजार कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेड कब क्लोज होगा, एमटीएसएल कब हिट होगा। जैसे ही एमटीएसएल यहाँ पे हिट होता है मेरा, डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बिल्ड करेगा डायरेक्टली 31 36, विच इज 100 पॉइंट्स अप। बट उससे पहले एक ही चीज है, हमारा मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, सॉरी कंप्लीशन ऑफ द डिमांड। एग्जाम्पल, this is my zone of action. In the zone of action, this is my previous demand allocation. ये कंप्लीट होता है, देन नेक्स्ट प्लान। अभी भी 250 पिप्स चाहिए हमें यहाँ पे क्लोजर के लिए। अगर ये क्लोजर मिलता है देन यस डेफिनेटली लॉन्ग की तरफ दिलदार आराम से बैठ सकते लंबे समय तक। ओके, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है यहाँ तक।
राइट, उधर से यहाँ तक इज जस्ट 30 पिप्स. What is breaker point allocation and retracement point allocation? I just seen in the liquidity video. I can't understand. Definitely, I'll explain before closing the stream. Okay. What a level! I thought my MTSL will hit. Thank you for saving my MTSL. इमरान, वो स्विंग कैरी करने बोला था ना शॉर्ट के लिए, वो कहाँ पे क्लोज किया आपने? And all the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट है पूछो. All the old members, do the back testing. With the back testing, do the forward relay bar testing. With the forward relay bar testing, do the live analysis. उसके बाद आओ ट्रेड करो. जब तक पता नहीं चलेगा मार्केट कैसे चलता है, अगर आप ट्रेड करने बैठोगे पैसे उड़ाते रहोगे. रियलिटी ऑफ द मार्केट्स. किसी ने बोला था सोलाना 95 तक नहीं आएगा. अभी भी 95. स्मिता मैम, you owe me 100K. अब बोलो. कितना भी स्ट्रॉन्ग कॉइन रहने दो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मार्केट रहने दो, लेवल डालने के बाद वो लेवल तक आना ही है, कुछ भी कर लो. एंड व्हाट डू यू टॉक अबाउट दिस, राइट? 3 महीने से ट्रेड चल रही है, 3 महीने से. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एक्शन 7837.
What do we see? Where is the market taking rejection from? अभी भी है. This will come down till 54, sorry 44 बोल रहा हूँ. 54 तक आएगा ये. नहीं आएगा. क्यों? और एक बार लगाना है. ओके चलो मैग्नम आइसक्रीम खेलते हैं. 54 तक आएगा. Okay, if you win, I'll get you one box of Magnum. If I win, you will get me one box of Magnum. Okay, done. XRP में 0.75 तक छूने वाला नहीं है. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो भी बायर्स है उसके साथ. नॉट प्रायर टू दैट. इंडियन सेशंस में क्या जानना है आपको, मिस्टर रंजित? आज का मूवमेंट ऊपर क्यों गया करके, बाइंग प्रेशर आया ऊपर गया, बट वो अभी भी जोन में ही है. जो प्रीमियम 39 से 105 तक गया है, उसके बाद दोपहर में वो प्रीमियम जाके 135 पे क्लोज हुआ, उसके बाद जाके रिजेक्शन लिया. मैं कुछ तो करने वाला था. एक दिन रिटेलर्स के जैसे ट्रेड करना है मेरे को. करेंगे. बहुत दिन हो गया. फ्रॉम द डे वन ऑफ लाइफ स्टार्टिंग टिल टुडे, डे वन टिल टुडे, कोई भी लाइव स्ट्रीम रैंडमली उठाओ, द क्लोजर इज इन ग्रीन. Sir, I am an intraday trader, but I can't catch any trade with full of confidence in Nifty or Bank Nifty. Because पहले आपके अंदर greed थी, you got the value, you lost it. Now you are having some capital to trade. With that some capital, you are looking for execution. आप execute करते हो, जैसे ही execute करते हो, you will feel the fear. जैसे ही fear आता है market के अंदर, you will tend to close it. जैसे ही close करते हो, what will the market do? Market will give a movement. जैसे movement आता है, आप FOMO में यहाँ पे लेते हो, loss करके बैठते हो. That is the 99% people, retailers की बात कर रहा हूँ, give the money to the market because they just don't follow the first trade. कितना आसान तरीके से मैं बोला था कि यहाँ पे 3 विंग सेटअप बन रहा है S2B1 का, राइट? शॉर्ट की तरफ तुमने ही पूछा था ना निफ्टी में, राइट? अगर इस सेटअप के हिसाब से भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट किए होते यहाँ पे,
इस जोन में, right, you had got a movement of 300 points. This till here, this was with a proper setup the movement had created. Selling pressure, creation, execution. Okay, definitely execution points है फिर से selling pressure इस point of action में कहाँ पे, राइट, उसके बाद मूवमेंट यहाँ पे आते ही बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए देखिए, विद द बाइंग प्रेशर देयर वाज अ पुल बैक, विद द सेलिंग प्रेशर वी हैड अनदर बाइंग प्रेशर, उसके बाद इस पॉइंट ऑफ एक्शन से सेलिंग फिर से दिखने को मिली है. सो दिस इज अगेन ए ट्रैप, सबको बिठाया है लॉन्ग पे, एंड थोड़े लोगों को शॉर्ट में भी बिठाया है यहाँ पे, बिकॉज दिस एक्ट्स एज एन रेजिस्टेंस. अगर ये वीक नोटिस कर रहे हो, दिस वाज द रिटेलर्स हु सैट टुवर्ड्स द शॉर्ट. अगर मैं रिटेलर्स के हिसाब से दिखाने लगूँ ना चार्ट, आप लोग पागल हो जाओगे, राइट. We have just captured the moment of this big move करके. यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किए करके. But keeping in mind, this is just a POI range in 15 minutes. So you're noticing, right, what big difference the market showcased you. नहीं तो हम वैसे भी कैप्चर किए, बट दिखाना है बड़ा बड़ा तो मैं 1 मिनट में डाल के दिखाऊँ या 5 मिनट में. अगर मैं 5 मिनट में भी डाल के दिखाऊंगा ना, आई हैव कैप्चर्ड ए मूवमेंट, बट आई डोंट वांट टू. कितना आसान है. Execution perspective is always not about how big it is, how perfect and how valuable it is. So always wait. It doesn't matter if you have taken the trade, if you have not taken the trade. The only one thing, discipline, consistency, and following the rest of the book. ये चीजें कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट करके बने रहो. इतना क्यों हंस रहा है भाई? Sir, I'm keen to learn mathematical trading. How to join your Telegram channel? We don't have any channels. So, General Lal Verma, good evening. We work only in three circumstances. One is Zoom,
One is live and another one is, sorry, another one is also Zoom. Two Zooms and one live. चलो यार, there is no topic. आप लोग doubts ही नहीं पूछ रहे हो. तो संतोष का doubt क्या था? What is breaker point allocation and retracement point allocation? हमेशा याद रखना, breaker point अभी काम नहीं करता है. Okay? So a movement action plan एक point of interest में generate होती है. Okay संतोष? एक point of action में आने के बाद यहाँ पे एक inducement generate होता है. With the inducement plan of action, the surplus creation of a POI gets generated. Right? जब भी surplus POI generation होता है, market will tend to move on it off. Right? उसके बाद market retrace करेगा to the breaker point range जो कि POI का top point है. Right? Top point में retrace होगी, उसके साथ movement recontinue करेगा, SL इसका low पे रहती है. Right? So this is the allocation as per the breaker point. Right? And the market will continue on the completion of mathematical number. ये हो गया breaker point. उसके साथ what is the next circumstantial move that we'll be looking for? The next circumstantial move is retracement point allocation. Just for an example, you are having a movement which is on towards the top. Right? अभी market यहाँ पे एक red candle बनाया. Right? इसके बाद retrace कितना होगा market में? Right? उसको analyze करना is one of the biggest thing. Right? Post the retracement of the previous supply converted into the demand. Right? Here you will get a creation of S2 B1 या B2 setup. So with that retracement point of allocation will be taken under the consideration and target कितना होगा? जितना मेरा previous supply यहाँ पे generate हुआ है उतने का movement action plan यहाँ पे दिखने को मिलेगी. So this is the difference between breaker point allocation and retracement point allocation. Okay, so these are the two major allocation points which will be taken under the consideration through the previous. अगर तुम ये retracement point allocate करना सीख गए ना, you have almost cracked trading by 80%. Okay, Santosh. Small move gives biggest for small retailers. मतलब रंजित, why gold is so volatile now? What's the reason? अगर इसे volatile बोल रहे हो, if you are saying this is a volatility, अभी भी दिसंबर 2023 का गोल्ड चार्ट देखो, you will understand. ऊपर विक है, नीचे विक है, छोटा सा बॉडी. I'll showcase you around. What do you see? This candle. 2,500 pips of wick, 250 points, 209 points of wick towards the selling side.
कितने लोगों की अकाउंट ब्लू हुआ है, कितने लोग सड़क पे आ गए यहाँ पे पता है? Because they didn't follow the proper risk to reward. 2023 गोल्ड रिसेशन चेक कर लेना, कितने लोगों का जिंदगी खराब हुई है। न्यूज़ पढ़ लेना काफी है। बिकॉज सब लोग जुआ खेलने आए थे। सो गाइस अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को जुआ खेलना है, इफ यू गाइस वांट टू गैम्बल, दिस इज नॉट अ प्लेस। इफ यू गाइस वांट टू लर्न एंड एग्जीक्यूट, डेफिनेटली दिस इज द प्लेस। हजारों स्ट्रीम्स है, हजारों लाइव चल रहा है, राइट? 300 रुपए में भी टिप मिल रहा है, 1000 रुपए में भी टिप मिल रहा है, 10,000 में भी टिप मिल रहा है। उनके साथ ले लो, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहाँ पे रहना है तो सीखो। वी फोकस ओनली ऑन लर्निंग। ब्यूटीफुल गाइस। अब बताओ कितने लोगों के स्ट्रीम में ये एलोकेशन पॉइंट है? एग्जैक्ट रिजेक्शन। मैंने कुछ चेंज किया? सो लर्न गाइस, लर्न। लॉन्ग वे टू गो, सो लर्न। सर एट 3044.321, 3044 नो यार, कुछ भी नहीं। S1B3 सेटअप यहाँ पे बना ही नहीं है कहीं पे भी। दिस सेटअप इज अ विंग मूव विद दैट S2B1 सेटअप। विद द S2B1 सेटअप ये वाला मूव आके S2B2 सेटअप है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को, राइट? अभी भी TP1 हिट। IG में TP1 हिट हो गया, यहाँ पे भी हो जाएगा। लवली। व्हाट अ रिजेक्शन।
अब बोलो गाइस, वर्क नहीं करता है। जब एक ग्रीन कैंडल बन रहा था तभी हमने अलोकेट करके रखा था लेवल्स को। नाउ सेम ही। Sir, considering price action from 2:15 p.m. only Indian time. 2:15 p.m. भाई, जसम S1 B3 सेटअप बनने के लिए पार्टनर इंड्यूसमेंट चाहिए या ग्रुप इंड्यूसमेंट चाहिए, फेक ब्रेक चाहिए, राइट? फेक ब्रेक के अंदर कैंडल क्लोजर चाहिए, उसके साथ कंटिन्यूटी में फॉल थ्रू, दैट इज S1 B3 सेटअप। ओके, यहाँ पे इंड्यूसमेंट पहली बार कहाँ पे है? देयर इज नो इंड्यूसमेंट ओनली। चलो मान के चलो कि तुमने ग्रुप इंड्यूसमेंट लिया, राइट? ग्रुप इंड्यूसमेंट होने के बाद आपको ब्रेक मिली, राइट? ब्रेक मिलने के बाद कैंडल क्लोजर उसी कैंडल के अंदर हुआ नहीं, तो हाउ विल दिस बी एक्टिंग एज S1 B3 सेटअप, right? So always be very careful while selecting the inducements. Good evening, Manan. कैसे हो? नितेश, ये S2 B1 एक्सेट्रा सेटअप्स प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मैं डेफिनेटली करूँगा, थोड़ा टाइम दे दो। आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू गाइस। From -1 to 0. Lovely. But I exited as I started to fear, so exited. From account -$750 to $150. Great. BTC 1000 points running. All the new members, जो भी doubt है पूछो, and all the old members do the back testing, do the forward testing. With the forward testing, make sure that you do the lag testing. Notes बनाओ डाउटों का, उसके साथ कंटिन्यूटी में बने रहो। पूछो यहाँ पे जो भी डाउट्स। BTC with setup search, S2 B1 setup and S2 B2 setup दोनों हैं यहाँ पे। कितना ट्रेड्स? 7 मैम, 7। नो, आई डोंट गिव। क्या बोल रहे हो भाई?
मनन क्या हो गया? No, I don't give a about whoever is saying anything about me. I decided from ki only do 6 to 8 p.m. till I don't get 2000 profit every day to control my mind and greed. वाह जनाब, अगर तू ये फॉलो कर लिया ना जो इधर लिखा है, मैं मान लूंगा. फॉलो करके दिखा. मेरे को सिर्फ 22 डेज इसे फॉलो कर. राइट, ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी. ब्यूटीफुल गाइस. सबका एमटीएसएल पॉइंट यहाँ पे होगा. मेजरली अरुंधति मैम एंड स्मिता मैम. वरुण का तो ऑलरेडी है. वरुण का ऑलरेडी यहाँ पे. इमरान एमटीएसएल फॉलो थ्रू में रखो. ये प्रोसीजर एड ऑन में रखना है इसे. प्रोसीजर एड ऑन कैसे करते हो? राइट, टेम्पररी अलोकेशंस तो द प्रीवियस इनसाइडर लिक्विडिटी हंट अलोकेट करो. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6. इंड्यूसमेंट छोड़ दो अभी के लिए, बाद में ले लेंगे. Allocation point number 1, allocation point number 2, allocation point number 3, allocation point number 4, allocation point number 5. This will be your target allocations as per the previous liquidity zone of fund, circulating supply and casual movement plan. TP1 will be at 75,705. उसके बाद continuity में 74,500. So this is the plan of action of BTC at the current state of actions. Okay. What should be the SL and MTSL in BTC? I am in short position from 76,773. 76,773. 76,773. 500 points take home. Sir, I'm so fed up from last 2 months and I got the reason. Great. Last candle is entry. Last candle is the entry is right, sir. आपका एंट्री एग्जीक्यूशन यहाँ पे है. I just lost my confidence. That is why I am not able to back answer anyone, and that is why I am in fear and crying. कोई नहीं. शेर खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि हार गया है. ब्यूटीफुल गाइस, टारगेट हिट हो चुकी है. जिनको भी डर लग रहा है एग्जिट करो. जिनको डर नहीं लग रहा है एमटीएसएल फॉलो करके बने रहो. सेम सिनेरियो विद बीटीसी. ओके, अब बोलो.
प्योर मैथ और कुछ नहीं. Say someone to allocate the precisions in the moment without having this green candle allocation with the same perspective with the same perspective shot. क्या क्लोज हुआ? जहां हमने मार्कआउट किया था उस मार्कआउट रेंज से ऊपर जाके क्लोज हुई यहाँ पे? तू कोई भी रिक्वेस्ट मत कर भाई. तुम्हारा रिक्वेस्ट इज लाइक द रिक्वेस्ट विच कांट बी फुलफिल्ड. I was not focusing. Sir, I have one request. From last many streams, I was not focusing on learning, just focusing on trades. Okay. So now you started to focus on learnings. I'm happy. Please both basics सा supply and demand वाला concept समझा दो. भाई इससे सस्ता और इससे बेसिक और क्या मैं डाल सकता हूँ बोलो? ये कंफ्यूजिंग है तुमको? नहीं ना? इज दिस कंफ्यूजिंग गाइस? रियली बताओ मेरे को. ये वाला ये वाला कंफ्यूजिंग है क्या? ओके, सॉरी सर. डन. बेसिक से समझाया करो. डन, डेफिनेटली करेंगे. सस्ता. सिर्फ लाइन मारनी आनी चाहिए. हम्म. राइट. व्हाइट लाइन नहीं, ब्लैक लाइन. ओ माय गॉड. Yo, Manan back in action. But it's not that much easy for me, at least. इस सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करने में इशू है सर मुझे भी. कोई अभी आप कुछ भी बोल रहे हो मुझे. फिर बुर लग रहा है, हिंदी नहीं. ओके. आई एम ऑल्सो वेटिंग टू लर्न फ्रॉम बेसिक. ये इतने दिन से मैं क्या इधर रॉकेट साइंस पढ़ा रहा था क्या आप लोगों को? ओके, डन यार. आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो कल का सेशन मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं, बेसिक. ठीक है. बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. सुधीर, लाइन ले. लाइन ले नहीं रही ना गोल्ड. मनन हो गया, डोंट वरी. आप लोग अलग ही हो यार.
अभी तो कहा मॉर्निंग नहीं करूंगा, विल बी फोकसिंग ऑन स्किल्स. इफ यू आर फोकसिंग ऑन द स्किल्स, फोकस इट इन द मॉर्निंग, ट्रेड इन द इवनिंग. एज सिंपल एज दैट. मैं मॉर्निंग में ट्रेड थोड़ी करने बोल रहा था. उससे पहले जनरल लिखना शुरू करो. जनरल के साथ एमएमपी का रूल्स फॉलो करो. एमएनपी के रूल्स के साथ पेशेंसफुली बैठना सीखो. ओके मदन. फोमो में, ग्रीड में, फियर में आके ट्रेड्स क्लोज या एग्जीक्यूट मत करो. सर गरीब को पढ़ने दो. आपको पता है चार्ट खोलूंगा ट्रेड हो जाएगा. कंट्रोल वैसे ही लाओगे ना. डन, आपकी मर्जी. वर्मा जी, कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क. ओ भाई, स्पैम करना बंद कर. वर्षा, इसे ब्लॉक करो थोड़ी देर के लिए. अभी ही बता दो थोड़ा सा, टीडीए वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा. आप डेली में कुछ बोलते हो, 4 आवर्स में कुछ और, 15 मिनट तक वो जर्मन हो जाता है. ओके. ओ माय गॉड. वेयर इज बिटकॉइन गोइंग? कहाँ जा रहा है बिटकॉइन? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा. इलॉन के साथ मार्स पर. इलॉन को बोलता रुक, इसको बेच. रुके. बट ये मजेदार लिखा था. आप डेली में कुछ बोलते हो, 4 आवर्स में कुछ और, 15 मिनट तक तो वो जर्मन हो जाता है.
अच्छा हुआ रशियन नहीं बोला. Oh my God. Dude, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज मत कर मेरा एट द करेंट स्टेज, ठीक है? मैं काम हूँ. मेरा एग्जीक्यूशन पेंडिंग है आज का दिन का अभी भी. सो प्लीज. वरुण का एसएल गया. यहाँ पे अरुंधति मैम का एसएल जाएगा अभी. गया. So sometimes the issues like current gold, it completed 1.618 target example 2978 and today morning it gave a up move. So the mindset is like it in reversal and we tend to look for previous flipped supply of the demand and then continuation of a up move. But here it's stuck in a POI range and then you showed that on monthly it needs to complete the demand. Right here we tend to get confused about the bias and about the pressure. While looking at the wick pressure, if there are multiple buying, selling pressure, then the adds to confusion. Okay, in that scenario, what you have to do, Nilesh, very simple and easy, right? Let's take the scenario point of this. In this scenario point of action, you know that the mathematical number was hit. With the mathematical number, there was a setup of S2B2, right? With the S2B2, you executed a trade. With the execution of the trade, market moved up, right? In the perspective of the previous, 3060 was our target. With 3060 target, what did market tend to do? Market created an S2B2 setup and created a downfall, right? Till this point of action, there is no biasness. You will understand exactly. But if you are getting confused at the point of interest, what you have to do, always wait for an action plan. How do you look for an action plan in association? Okay, the market tend to create the wick from the top and the bottom, wick from a top and a bottom. There is a circulating supply built, right? You know very well that whenever there is a circulating supply created, market will hunt it out. So wait for that hunt, na? So what did market tend to do in this POI range? Definitely, there was a selling pressure at every moment. There was a buying pressure. If we look in perspective of retailers, this was a proper support and resistance what they followed, right? With that perspective, what did market tend to do? Market tend to create a eggshell theory. With the eggshell theory, a break. So that is the circulation that you have to look for, na? Why are you getting confused? Okay, अगर उतना भी confusion है तो बॉक्स डाल के बैठ जाओ. बॉक्स से बाहर निकलेगा तभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा. उससे पहले नहीं. Right? That should be the perspective of looking into the markets, right? Definitely, if there is a POI, there will be liquidity hunts. In that liquidity hunts, I will make sure that, or you should make sure that you don't have to give the money to the market. You just have to wait circumstantially, calmful, and patientfully to understand the circumstances and make sure that you execute the trade at the right point. Okay, Nilesh? सर प्लीज इवनिंग वाला स्ट्रीम में समझा देना. डेफिनेटली. माइन एसएल हिट. कौन सा एसएल हिट हुआ भाई? इमरान, हाउ डिड योर एमटीएसएल हिट?
उनका एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ एक्शन इस पॉइंट से है। इसका एड ऑन क्वांटिटी का एसएल अभी तक एमटीएसएल हिट नहीं हुआ है, उसका एमटीएसएल पॉइंट इज हियर ना। हाउ डिड इट हिट? वो ये जो प्रीवियस मूवमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है उसका एमटीएसएल हिट हुआ, करेक्ट? यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन का एमटीएसएल कैसे हिट हो गया? ओके, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। उनका एड ऑन क्वांटिटी का अभी तक हिट नहीं हुआ है, प्रीवियस जो एक्शन पॉइंट है वो हिट हुआ है उनका। ओके, 2000 पॉइंट्स रनिंग, ब्यूटीफुल वेंकट, ग्रेट। किसमें लिए ट्रेड? यस, प्रीवियस वाला। ये एड ऑन चल रहा है करेक्ट अभी भी? अगर एड ऑन चल रहा है वेल एंड गुड, प्रीवियस वाला क्लोज किया, ग्रेट। सर हाउ टू लर्न एमसी बेसिक? Jaron, what are you explaining getting half of that? Okay, I get your point. I can understand your pain, Tarjendra ji. Let me see what can be done. RB, you're having fun. Always, man. Okay, sir. Good night. Thank you, Manan. Good night. Isala Kapnamre. Out हुआ. When did I get the cup? Yes, previous वाला था. Yes, चल रहा है. Great. Not mine, sir. BTC I am watching. Okay. राजेंद्र जी, आपका जो मैसेज है वो जूम सेशन वाला कैसे ज्वाइन करना है, वो टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई आ चुका होगा, टीम दे चुकी होगी अब तक, चेक कर लीजिएगा एक बार। लवली।
Okay, sir. After the 3060 is hit, how do we analyze that it might create a POI? You don't have to analyze. Understand, this is your previous structure, correct? So just let's not look into this point, okay? So just think the market is moved till here, okay? In this perspective, what will be your next circumstances? Your next circumstances will be looked in perspective of to the previous. In this scenario, I will draw this point of action, right? In this point of action, what do we notice? This is the point one range with the point one range, point two range of allocation. With the point two range of allocation, अगर market उसी range में है, right? Till the time there is no break, don't execute at all. Doesn't matter. Simple as that. Let it be 300 pips, let it be 500 pips range, let it be 600 pips range. Don't execute till the time you are building the capital state. Once you have built the capital state, no doubt, execute here also, execute here also. I don't have problems. Till that time, you can just ignore it. Nay, nay, you. No, don't look into that perspectives. That will not be under the considerations of the risk to reward. Wait for the right movement points to take under the considerations in the previous of S1 and B2 and S2 B1. Both the scenarios get into the plan of action of first, then you look for an execution with the wing. Not yet, man. It's a beautiful move. Calibration is still there. Point of action 1, point of action 2. Right, you? So allocation point will be taken under the consideration of the previous. In this circumstances, scenario 1 will be part of this with the part of this 150%. Right, with the 150%, the previous allocation of S2 will be taken under the consideration of this. Okay, breakthrough completion 150% and 100% is in the same zone, right? So yes, definitely you will have a really good range of action on the completion. कल भी market gap down open होगा. Okay, so these are the plan of actions of Nasdaq what you will be following at the current point of scenarios. And that major allocations will be as per the previous inside liquidity points with the inside liquidity point segregation with the segregation volume allocation. All 4 points will be taken under one consideration. Okay. Great. 80 pips running अंश जी. 80 pips running में है तो MTSL follow करके बने रहो. No, sir, I am not executing any trades yet, just trying to understand. And you are right for that the forward testing is important, as in the back testing, we can see the next swing that are already formed. That's right. So you do the back testing. I don't have any problems with that. Forward testing is important. Post forward testing come down to live, then with the small execution perspectives. That's totally fine.
मूवमेंट्स तो आते रहते हैं जनाब. यो अंबिका, ग्रेट, कीप इट अप, ब्यूटीफुल. MTSL गलत जगह पे है, सही पॉइंट पे रख लो. Beautifully completed. So this will be your MTSL point, Ambika. Okay. 100 pips running in gold. Great. न्यूयॉर्क सेशन का रूल क्या है वो फॉलो करो. समझ. 40 pips, I know, but after certain move, what to be done? I want to know that. This is the last time, guys, I am explaining you how to look into MTSL. 40 pips का SL रखा है. 40 pips का SL रखने के बाद मूवमेंट 60 pips पे गया है. जब 60 pips पे जाता है तो CTC प्लस 20 pips पे आपका ट्रेलिंग होता है एंड 40 pips पे आपका MTSL. राइट, जैसे ही 80 pips जाता है आपका MTSL पॉइंट विल कम डाउन टू 60 pips, योर सिस्टम ट्रेलिंग विल कम डाउन टू 40 pips. Right, like that you continue the movement till the mathematical number targets are hit. So at the current range of action आपका 40 pips का सिस्टम ट्रेलिंग होगा, 60 pips का आपका अलोकेशन पर्सपेक्टिव होगा, जो कि MTSL पॉइंट ऑफ एक्शन. And congratulations, Samat, for building your capital from point of action A to point of action Z, which is 55x of the capital building. Keep it up. It's not showing a wrong data, it's showing a right data. Refresh कर लो एक बार.
Exness is showing 36. Exness is showing 38. IG is showing 39.76. Capital.com will be showing something else only then. 29. But follow through the candles, don't go by the numbers. Candle perspective से जाना. फिर से सर्वर क्रैश हुआ क्या? कोई बात नहीं है. Forex.com. Okay. At the current stage, I am just drawing through the previous to the current because allocations will be in perspective to the next, right? So point of action 1, point of action 2, previous scenario indication 1, reallocation spectrum 1 and reallocation spectrum 2. Okay? 200%. Keep it up, Imran. Keep it up, Hans G. Keep it up, Samarth. Sorry. All the best. Finally, back in action. Thanks, recipe book. You are the one who didn't believe in the start, right? That is past. And he has done it really good. Huh? With one deployment point of action, he has reached a deployment point of action where the movement allocation is in the segregation. Take home earns 150 pips, 100 pips के ऊपर take home होना चाहिए आपका. Okay. Same thing for summer. Take home should be 150 plus. System trailing 100 pips में रख लो. Continuity will be in the next. Stream will be there for next 15 minutes. जो भी doubts है पूछ लेना. Yeah. Great. Oh, good evening, Bharat. सर एक क्वेश्चन है, हम स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो इंड्यूसमेंट रेंज में देखा है या रिट्रेसमेंट देखना है? प्लीज समझा देना प्लीज. रिट्रेसमेंट इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन तभी देखेंगे जब स्क्वायर रूट कैलकुलेशन होगा. CTC hit 100 pips. बुरा मत मानो, that's totally fine. ओके. रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन कल के दिन में मैं समझा दूंगा आपको भरत मॉर्निंग में कि हाउ डू यू लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द स्विंग्स. ओके.
सिंगल 2 डिजिट से एक इंसान ने पहुंचा है 4 डिजिट्स। ग्रेट। एंड ये 5 डिजिट्स में पहुंचने में बहुत देरी नहीं है, एंड ये इंसान जो पहुंचा है 3 दिन में पहुंचा है। सो आई एम रियली प्राउड। सर, इफ आई कुड हैव गॉट टुडेस ट्रेड, यू आर इन प्रोक्रेस्टिनेशन स्टेज वेंकट। अगर ये ट्रेड में ले लेता, if I could have taken this trade, if I could have lent out this trade, I could have protected my capital. If I could have waited for the exact setup to build. This and all are procrastination stages. You have to get out of it. चलो गए, आज का दिन में भी इवनिंग सेशन भी ग्रीन क्लोजिंग हो चुकी है। कोई डाउट्स है आप लोगों के पास? Congrats, Samad. Great. Samad Patak, great job. Definitely, I'm not happy because he's not backtesting. But yeah, execution wise, definitely I'm happy that he has started it. He's not following the rule book. कल S2B1 explain करना please. Definitely, Sudhir, I'll do it. Sir, can you please tell me once how the execution you have done in gold with entry price? It will help me to understand the execution. मेरा execution चाहिए आपको, वो भी gold. मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट आके 3154 पे है। मेरा सेकंड एग्जीक्यूशन पॉइंट आके लॉन्ग का चाहिए, शॉर्ट का चाहिए? S2B2 भी एक्सप्लेन कर देना डेफिनेटली। राइट। सो जैसा मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे था, सेकंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे, थर्ड एग्जीक्यूशन यहाँ पे, उसके बाद फोर एड ऑन क्वांटिटी वाज हियर. With the fourth add-on quantity, the trailing was at the MTSL point with this. Then we took the trade of long with the wing. Wing closure होने के बाद neck execution was taken consideration with this point. With this point of execution, the fifth add-on will be at this point, and then the continuity. इस point of action में मेरा ये वाला trade और ये वाला trade close हो गया था. The four trades were still on. With that point of action, we looked for an again execution over here, the add-on. With that add-on 1, ये तो आप लोग live में ही देखे हो. Add-on 1, add-on 2, add-on 3, add-on 4. With this 4 add-on point of actions, we took for an execution over here. This execution got with the proper MTSL. MTSL setup के हिसाब से वो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुई थी, एंड द कंटिन्यूटी इन द ब्रेक शो. इस ब्रेक थ्रू में आज के दिन में ये शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया था हमने. शॉर्ट ट्रेड छोड़ के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ S2B2 के साथ लॉन्ग किया था, उसके साथ S2B2 के साथ शॉर्ट. तो यही ट्रेड हमारा चल रहा है अभी तक. Right. So in this today's scenario, two trades is running. One is this,
one is this, right? तो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन मेरा एम टी एस एल यहाँ पे है, हिट होगा तो एम टी एस एल हिट होगा, ये रनिंग में रहेगा, इसका एम टी एस एल पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे है मेरा, ओके, एट द कंसिडरेबल वे. So आज का major setups for S2B2 1 2 with this point of action one S1 B1 setup was created. So that's it. So ये trade अभी भी MTSL hit नहीं हुआ है, तो वो चल रहा है short की तरफ. उसका MTSL point ये वाला था. Okay. Same BTC का भी अभी भी trade चल ही रहा है, because the execution point of action was from this point. X2B1 आज के दिन में हमने एक ही ट्रेड किया था, वो भी सुबह में ये वाला लॉन्ग का MTSL हिट होने वाला है at this point of action on the closure of the movement. किस में चाहिए, गोल्ड में चाहिए, किस में चाहिए, बताओ तो सही. गोल्ड में चाहिए तो हमारा एंट्री प्राइस ऑफ एक्शन वाज एट 2981.20 2983.500. ये लॉन्ग का ट्रेड था. शॉर्ट का ट्रेड आके वी हैड एग्जीक्यूटेड इट फ्रॉम 3044.153. यहाँ पे थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा था, तो सेम कैंडल के ऊपर एग्जीक्यूट किए थे. ओके, तो उसके साथ कंटिन्यूटी. एंड वन मोर एग्जीक्यूशन पॉइंट विच वी टुक एट वाज 3040 इन द इवनिंग सेशन, ये वाला शॉर्ट. ओके, सो दिस आर द 3 एंट्री पॉइंट्स विच वी आर इन. ये वाला लॉन्ग मैंने नहीं किया बिकॉज वो मेरा सेटअप है ही नहीं. स्टॉक्स बताने बोल रहे हो, लेट मी चेक. कल सुबह डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, ठीक है. Trade fearlessly with the proper risk to reward, with the proper risk to reward, emotionless trading, with the emotionless trading, make sure जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Be in the directions of the math. Trade patience fully. Don't execute the trade in running nor in FOMO. Sit calmly till the mathematical number targets are hit. All the new members do follow the back testing. With the back testing, come down to forward relay bar testing. From the forward relay bar testing to live execution. With the live analysis, small money लेके आके confidence build करो. Confidence build करने के बाद get in with the real value, following a proper risk to reward ratio in the executions. With that, protect your capital. Make sure that you grow your account, not lose the account. This is Nitesh signing off. मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए take care, bye bye, good night, शुभ रात्रि.